Hey guys, hi, good morning. And I know, sorry, I got up early. I finished the PPT and then I slept again. And when you do that, that is what happens. So, what's up? How's everyone? And I see that there isn't a lot of people here. Let me check एक बार Telegram so that if there's a message, sir, where are you? Okay, guys, sorry guys. I woke up early, I finished the PPT, and then I slept again. And I didn't sleep on purpose. I was just, um, catching some rest, and then that happened. Okay, anyways, so welcome to the channel. Let's Crack Foundation NTSE, and I hope all of you are doing good, doing amazing. You're tucked in your bed, warm and nice, and we are good to go. ठीक है पहले introductory things that you already know that we need to cover that सब कुछ ट्रैकर में अपडेटेड है ट्रैकर में अभी आपका सेशंस कल तक का अपडेट हो चुका है गुड मॉर्निंग अंकित हाय रोहन and besides these sessions you also have materials updated for diversity updated for genetics updated for reproduction diversity और reproduction हम YouTube पर कर रहे हैं genetics हम आपका special पे कर रहे हैं right Telegram Sona Singh Unacademy if you need to reach me regarding anything. What's Bugs Bounty? If you find any problem, inappropriate behavior, or content, let us know by filling the form that's in the description down below and we'll take care of it. And obviously, we'll reward you for doing that. Please use it wisely. अब plus क्या है iconic क्या है these are subscriptions what's a subscription you get access to Unacademy का batch courses through this top educators होंगे regular doubt हर चौथी class becomes a doubt class there's practice sessions there's live test series study material and आपके lectures भी आपको recorded formats में भी मिल जाते हैं that means if you're missing a class no harm done now कैसे लेना है सबसे पहले कैटेगरी categories IIT JEE NEET Foundation that means board then foundation check now choose a महीना जितना बड़ा महीना आप चूज करोगे उतना ही आपको पर मंथ प्राइस में you'll get a benefit ठीक है add the code SONA05 which gets you an extra 10% off ठीक है iconic subscription क्या है I was sleeping and waiting for you also if no class I would be sleeping your class as an alarm for me uh, even I got up early finished the PPTs and then I was like okay let me catch a slight alarm so I just went back to the pillow and I didn't realize when I fell asleep and then shukriya to my watch I have put up alarm at 7:25 so I was like okay there's an alarm I'm late so I rushed up quickly did the stuff and then came back okay so iconic subscription may it's almost every feature is on plus is there in iconic but besides you also have a personal mentor live doubt solving weekly reports sprint connect sessions study planning and all benefits are already there तरीका वही है पहले category फिर महीना and फिर code choose करते ही you get a 10% discount now if you're new to the platform you're not sure if you should use your money right now or not go for special classes are free real time you have question tabs you can have polls leaderboards इससे आपको पता चल जाएगा कि होता कैसे है once you're through with that you can go ahead and go for more now Unacademy Prodigy क्या है we have a 20 lakh का college grant the grant starts from 23rd January 10 a.m. onwards. You have to use a code, use mine, Sona05 to enroll. And then you have to choose your category, कौन से class को आप belong करते हो, choose a test date and choose a slot. In that slot, appear for the test. Now, there are exciting rewards in every test. The different rank holders get different rewards. MacBook Air, Apple iPhone, Apple iPad, Echo Dot, वगैरह वगैरह. But the key thing is 29th और 13th Feb 29th Jan और 30th Feb को you win a 20 लाख का college grant. So आप खुद ही अपनी college studies को finance कर पाओगे. 31st January तक you have more offers which is for first 500 subscribers only.
those who are already subscribed, if you are extending your subscription for 12 months of plus an iconic or iconic, you get 3 months and 6 months extra respectively. तो ये अमेजिंग ऑफर का समय है because it's good, it's not good morning, it's January, right? And there's 2 batches, premium batch foundation 10 term 1 term 2 के लिए और golden batch class 9 term 2 के लिए. Guys, don't miss this opportunity, right? Use the opportunities as much as possible and make sure that you take advantage of these. ठीक है? Good morning, guys. Good morning, guys. Good morning, guys. Okay, chalo, let's switch to padhai now. Sorry for my unkempt hair. It's because I fell asleep in the last few moments. Okay. Chalo. So, last class we saw reproduction at a very cellular level. हमने देख लिया कि कैसे reproduction के पास cellular reproduction, mitosis और meiosis has a तरीका, right? Has a तरीका to bring out the best. हमने meiosis के advantages को इस चीज से समझा. So when did you wake up? I think I woke up at 6:50. I tried to wake up at 6, but then it went to 6:15 and then I slept again after finishing the PPT. I fell asleep again after finishing the PPT and then I woke up again and now I'm here with you. Okay. So, हमने पिछले क्लास में possibilities देखी थी that thanks to meiosis in sexual reproduction you have 2 to the power 23 to the power 2 possibilities of gametes. हमने देखा था कि how यो जो कहते हैं ना, you're unique. You are indeed unique because there was your parents had a chance of 2 to the power 23 to the power 2. I think that is 3 2s are 6, 2 2s are 4, right? ये सही है ना? Maths people, anyone? Have I done this correctly? 2 to the power 23 to the power 2 is equal to the power 46. Is it correct? Yeah? Correct, right? Just verify, huh? So basically, your circadian rhythm even doesn't follow his rule. Yeah, Ikratman. तो आपके पास you are one of the 2 to the power 46 combinations that your parent could have made, right? आप 2 to the power 46 combination में से एक हो जो आपके parents आपके लिए बना सकते थे. So whenever you look at your mirror and whenever you think कि oh test खराब चला गया, oh आज trophy नहीं जीता, remember you're unique because you are one of this much, right? And I don't know how to read this number, but that is the number. ठीक है. Now meiosis हमने कल cover कर लिया था and we talked about what happens in prophase 1. I think Kritigan was there as well in the last plus class में भी हमने बोला था that you want थोड़ा सा about stages as well. Stages of prophase 1. So I've brought this once again. I'm re-emphasizing what happens in each individual stage is perhaps important for NEET purpose, but आपको general flow of DNA should be remembered. That's it. But if you want, this is in front of you. Leptotene, zygotene, pectine. So can you do a slight recap? I will recap after finishing this. But I was doing the same thing, right? I was talking about meiosis. So this is NEET series, sir. Yeah, beta. This is NEET. This is, I did not brand it NEET series, but this is very much NEET 2024 series. ठीक है? Hi Toshika, good morning. Sir, I'm Mahi Verma, regular रहूंगी. Okay, Mahi. Welcome to the class. So, Lepto team, beta, I did not brand this NEET 2024, but level कोशिश करेंगे almost उतना ही रखने का. So, लेप्टोटीन में क्या हुआ? हमने पहले बोला था कि जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, they start coming together. But latest research already ये बता चुका है कि वो पहले से साथ होते हैं. They start attaching towards the nuclear membrane to come together. ऐसा रिसर्च अब बताती है. बट ठीक है, इवन दो आप लेटेस्ट रिसर्च को इग्नोर कर दो, एनसीईआरटी के हिसाब से the homologous chromosomes they start to condense and come together.
By zygote the synapsis begins. Synapsis is what? The homologous chromosomes of coming together लगभग खत्म हो जाता है and you have bivalent या tetrad, आपकी मर्जी आप क्या बोलोगे. पैकीटीन में द क्रॉसिंग ओवर हैपेंस. क्रॉसिंग ओवर इज व्हाट? जो इंटरनल आर्म्स हैं वो एक दूसरे को के ऊपर लपेटा जाते हैं. एक चीज याद रखना, लपेटा जाना और एक्सचेंज हो जाना अलग अलग चीज है, ठीक है. सो व्हेन आई से क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन हैपेंस इन पैकीटीन, it means they have exchanged the arms. They have first crossed over. They are cutting and pasting and making and basically trying to exchange the arms, and then they try to move apart. समझो इस बात को. This is me, this is someone else, so we shake hands. एक सेकंड ऋषभ, एक सेकंड बेटा, just let me finish diakinesis तक, उसके बाद I'll take down. Don't worry, let me just try to get an example, you know. I don't have anything to take an example. Okay, no worries, my hands it is then. So this is person number 1, person number 2. Person number 1 and person number 2 shake hands. Very good. While they are shaking hands, they are trying to exchange this, you know, exchange the palms. Palms exchange. Very good, done. Now they are trying to get away. Right? Now they are trying to get away. So exchange happens during the पैकीटीन. Now they are trying to get away. डिप्लोटीन में the entire arms are, you know, apart from each other. Arms अलग अलग हो चुके हैं, but they are still attached at just one point or two. That's called chiasma. Exchange happened at पैकीटीन. They are trying to move apart, but एक जगह चिपके हुए बेचारे. जहां पे चिपके हुए उस पॉइंट को कह देंगे chiasma. Chiasma is a crossing. Anywhere that you find a crossing, that's a chiasma. So chiasma is visible in diplotin. They are trying to move away, right? Diakinesis is just like normal. Bivalents are ready for metaphase. Nuclear membrane is going away more speedingly, and they're trying to come near the equator. Okay? So these are the phases of prophase 1, and now this is your doubt minute. Go ahead and ask if you have any question. हाँ जी बेटा. If you have any questions, feel free to ask. Yeah. I think I should switch off my heater now. The room is warm enough. Beta G's, if you have any questions, this is the time. So what happens at zygotine? Synaptonemal complex is the two homologous chromosomes, they come together, they sort of join in between by using different sets of proteins, right? They come together, they sort of join in between. There are different proteins involved, cohesin, lateral complexes, blah blah blah, need not talk about that. Okay? But they sort of form a bridge in between them so that crossing over हो सके. So what happens at zygotine? अच्छा हो तो गया, अच्छा ठीक है. So what is this enzyme used for cutting the parts of the crossed over chromosome? What is the enzyme? I'm not sure if it is separase. I'll need to check, Risha. I'm not sure if it is separase. I need to check. ठीक है, शायद separase होता होगा. I'll एक बार check करके I'll tell you. ठीक है. Ajit, how to study in winters? It is so tough. High five. Better be motivated by studying. Believe me, that is one thing that will work out for you in the long run. ठीक है. So can you explain the difference of chromosome? What a chromosome? Extremely condensed DNA. Right now, these are all forms of chromosomes, right? These are all chromosomes. Two chromosomes coming together and playing hide and seek. What's a chromatid? ये जो एक branch है ना बेटा, this is a chromatid. This is chromatid number 1, chromatid number 2, chromatid number 3, chromatid number 4. One piece of unduplicated DNA is chromatid. Chromosome could have just one chromatid अगर S phase नहीं हुआ है तो. Chromosome could have two chromatids अगर S phase हो चुका है तो. Because
They are attached at a point called centromere. Centromere is a region where the most close association occurs between the two chromatids because they are extremely duplicated. So please give a tip to wake up early, like how do you wake up at 6? Rishabh, I don't know if this is scientific or not. I don't know if this is scientific or not. First of all, try to make up a routine. Try. Matlab, sleep at a constant time. Matlab, if you plan ki you sleep at 10, sleep at 10. Within 10 to 15 minutes, but don't move it up, move it down too much. Secondly, before you sleep, plan for the next day. That tomorrow I'll wake up at 6, I'll do this, I'll do that, blah, 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 blah. I don't know how does this work. Sometimes this wakes me up, Sometimes I wake up even before the alarm goes on. So I don't know how this works, but it does better. I don't know how. Okay. Sir, in diplotene, the arms which are crossed are now trying to separate and are just remain attached at one point. More than one is possible. यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए कायाज्मा एक ही दिखाया बेटा, बट बेटा कृतिकन देखो ऐसा भी हो सकता है। अरे आई नीड ब्लैंक पेज प्लीज कम ऑन। चलो यहाँ ब्लैंक पेज है, ऐसा भी हो सकता है। देखो दिस इज वन, ठीक है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे कायज्मा है, सॉरी, यहाँ पे देख लो काइज्मा नंबर 1, काइज्मा नंबर 2, काइज्मा नंबर 3, जहां जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ था ना वहां वहां काइज्मा होगा। जो लंबे क्रोमोसोम्स होंगे मल्टीपल पॉइंट्स आपको काइज्मा दिखेगा, ठीक है। कूल है सर। एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन डायाकाइनेसिस? डायाकाइनेसिस इज द एंड। नाउ एंड मतलब इट विल प्रिपेयर फॉर द मेटाफेज, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा गायब होने लगेगा, मूवमेंट स्टार्ट हो चुका होगा क्योंकि मेटाफेज आने वाला है। सर काइनेटोकोर इज अ प्रोटीन, इट्स अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, नॉट जस्ट वन। सर देन सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर ये है बेटा जी, एक पॉइंट इन द बिटवीन और समवेयर जहां पे आपका द क्रोमैटिड्स आर अटैच्ड, ठीक है। सर सो देयर कुड बी मल्टीपल पार्ट्स एक्सचेंज, डेफिनेटली पॉसिबल। ऋषभ, अजीत सर काइनेटोकोर इज अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स बेटा, ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। Are we clear with this much? Should we proceed? बेटा जी, अगर मियोसिस क्लियर है तो फिर हम कहानी आगे बढ़ाएंगे। So this is no, Toshika. We were talking about meiosis. Mitosis is done. Okay. चलो. So please explain the 2 into 23 into 2. अच्छा, देखो. What is 2 into 23 into 2? I need a blank page. 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 This PPT will get me in trouble. Okay. Okay. What were we talking about? Okay. सर ये एनसीईआरटी में तो नहीं है, आई एम नॉट नीट एस्पिरेंट, तो मैं क्या करूं? बेटा फिर देयर आर प्री एग्जिस्टिंग लेक्चर्स जो मैंने पहले लिए थे एनटीएससी के लिए, आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। माही वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज वैसे भी द दिस विल ओनली कंटिन्यू फॉर अ फ्यू, नॉट फ्यू, दिस विल कंटिन्यू टिल 15th, उसके बाद यू विल नो द प्लान, ठीक है। सो आप यू कैन चेक द ओल्ड लेक्चर्स। नाउ एक बार सोचो, दिस इज पापा का क्रोमोसोम, दिस इज पापा का फर्स्ट क्रोमोसोम, दिस इज पापा का सेकेंड क्रोमोसोम, पापा का फर्स्ट क्रोमोसोम का कॉपी, पापा का सेकेंड क्रोमोसोम का कॉपी। अभी मैं सिर्फ दो का एग्जांपल ले रहा हूं। आई एम जस्ट सेइंग दैट देयर इज, अरे यार, देयर इज टू क्रोमोसोम्स इन दिस पर्सन। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म। दिस इज पापा का फर्स्ट क्रोमोसोम, पापा का फर्स्ट क्रोमोसोम का कॉपी, पापा का सेकेंड क्रोमोसोम, पापा का सेकेंड क्रोमोसोम का कॉपी।
दिस इज मदर का फर्स्ट क्रोमोसोम, मदर का फर्स्ट क्रोमोसोम का कॉपी, दिस इज मदर का सेकंड क्रोमोसोम, मदर का सेकंड क्रोमोसोम का कॉपी, राइट? सर विल यू आल्सो टेक रिप्रोडक्शन नीट 24 सीरीज? बिकॉज बेटा देखो, इनफॉर्मली नीट 2024 है, सुनो सुनो सुनो, डोंट गो फॉर लेबल्स, लेबल्स डोंट सर्व यू एनीथिंग। कुछ चीजें आप बहुत डेप्थ में समझोगे, कुछ चीजें थोड़ा डेप्थ में नहीं समझोगे। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका इट्स टू मच ऑफ नेम, इग्नोर कर दो, ठीक है? कुछ चीजें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डोंट इग्नोर स्टफ, व्हाई? बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड। एसेक्सुअल में देयर वुड बी नेम्स, ये है, गेमा है, वो है, यू कैन इग्नोर दोज, राइट? एंड आई विल टेल यू कि क्या इग्नोर कर सकते हो, बट अब लॉजिस्टिक्स छोड़ो, इधर ध्यान दो। सो रिमेंबर व्हाट आर दीज? दिस इज होमोलोगस का सेट। मेरे पास दो सेट है होमोलोगस क्रोमोसोम के। आई हैव टू सेट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, राइट? जब मियोसिस होगा, फाइनली व्हेन द मियोसिस इज गोइंग टू हैपन, मियोसिस 1 में पापा का सेट एंड मम्मी का सेट, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू अलाइन एट द सेंटर, मेटाफेज पे, सारे के सारे सेंटर पे अलाइन होंगे। बट किस तरह अलाइन होंगे? देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज कि वो किस तरह अलाइन होंगे, राइट? नाउ रिमेंबर, राइट नाउ at this time there is no choice between papa का chromosomes, chromatids, and mummy का chromatids. There is no choice, they are tied to each other at centromere. So let me simplify them by just writing पापा का फर्स्ट, पापा का सेकंड, मम्मी का फर्स्ट एंड मम्मी का सेकंड। नाउ लेट अस लुक कि ये कितने तरह से अरेंज हो सकते हैं एट द इक्वेटर। They could arrange like this. Possibility number 1, this is possibility number 1. What is the second possibility? Possibility number 2 is Papa ka 1 pairs with Mummy ka 1 on one side. Sorry, Mummy ka second on second side and Mummy ka 1 on other side. So there is a way, there is another possibility to group this. There is another possibility to group this, right? And then you are going to separate. Meiosis 1 में क्या कहते हो आप? सेपरेट ही तो करते हो homologous chromosomes को. Now if you see how many types of gametes you are making right now, no crossing over indeed, अभी कोई crossing over नहीं करा रहे, but you can clearly see, one, you can get a sperm cell, imagine करो, जिसमें दोनों क्रोमोसोम पापा के होंगे. You can get a sperm cell जिसमें दोनों क्रोमोसोम मम्मी के होंगे. You can get a third type of sperm cell जिसमें फर्स्ट क्रोमोसोम पापा के, सेकेंड क्रोमोसोम मम्मी का. You can get a fourth type of sperm cell जिसमें फर्स्ट क्रोमोसोम मम्मी का और सेकेंड क्रोमोसोम पापा का. So you had two sets, and can we say we have 2 to the power 2 combinations, 2 being n, or n is equal to number of homologous sets that you have. क्या हम कह सकते हैं कि using meiosis आप 2 to the power n types of gametes बना सकते थे by combining the chromosomes in different fashion, right? अब इंसान में 23 सेट्स हैं, so you can create 2 to the power 23 different types of gametes. One individual, one person, the male guy or the female guy can create 2 to the power 23 different possibilities of gametes, different types of gametes, by combining different chromosomes in different positions differently. Now sexual reproduction में दो लोग आते हैं. So papa and mummy can also create 2 to the power 23 different combinations, and they together will come and produce the zygote. तो देखा जाए तो 2 to the power 23 whole to the power 2 different combinations के zygote बनने की possibility थी. So you are unique in 2 to the power 46 combinations that was possible. So your mother and father could have made 2 to the power 46 different zygotes, but you are the one that was chosen, not chosen, that came out of that random sorting. So this is what is 2 to the power, this is the real power of sexual reproduction.
अब यहाँ पे वी आर सेइंग नो क्रॉसिंग ओवर, बिना क्रॉसिंग ओवर के इतना इतना पॉसिबिलिटीज है, बिना क्रॉसिंग ओवर के। जैसे आप क्रॉसिंग ओवर करोगे आपको पता है 50% इंक्रीज हो जाएगा, यू विल इंक्रीज दिस बाय 50%। कैन समवन टेल मी व्हाई 50%? कैन समवन टेल मी व्हाई 50%? क्यों 50% इंक्रीज हो जाएगा? सो व्हाट इज इट एक्स्ट्रा टू? एक्स्ट्रा टू मतलब एक, देखो आप दो का मिला रहे हो ना बेटा, पापा ने 2 टू द पावर 23 कॉम्बिनेशन किया और मम्मी ने 2 टू द पावर 23 कॉम्बिनेशन किया, इसीलिए मैंने इसको 2 से ओवर पावर कर दिया 2 टू द पावर 46, राइट? बिकॉज आउट ऑफ द 4 क्रोमैटिड्स, इस पिक्चर को देखो दोबारा, आउट ऑफ द 4 क्रोमैटिड्स सिर्फ अंदर वाले क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में कर रहे हैं। नो मेंटी राइट नाउ बेटा आदित्य, नो मेंटी राइट नाउ। मेंटी सिर्फ एनटीएससी पीवाईक्यू में होगा, अभी कोई मेंटी नहीं हो सकता, मतलब बहुत कंटेंट है बेटा, अगर हमें डेप्थ में पढ़ना है तो मेंटी का त्याग करना पड़ेगा, ठीक है? मेंटी 3:30 बजे वाले सेशन में करेंगे बेटा जी। तो अगर मेरे पास, गाइस 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 थोड़ा सा ध्यान दो यार, अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो क्रॉसिंग ओवर सिर्फ अंदर वाले आर्म्स में हो रहा है, यानी आउट ऑफ द 4 you are doing crossing over just in 2, right? So that is why you can say that the crossing over अगर सिर्फ एक बार भी हो, if it's happening even just once, there's a very good possibility it will multiply the variation here by 2, multiply the variation here by 2, and that means this whole thing would be multiplied by 4, right? इसका मतलब now think of all the amazing combinations that your parents can make, right? Now we are going to go ahead, and who can tell me what's the oldest species on Earth or planet Earth? Now we are starting types of reproduction, asexual and sexual, and specifically asexual को आगे डिटेल में कंटिन्यू करेंगे, बट उसके पहले what is the oldest species on Earth and what is the largest organism on planet? Oldest species कौन है और largest organism कौन है? फटाफट, you are allowed to Google, you are allowed to Google oldest species. No, no, not at all. Protist is old. No, 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 no. When I say oldest species, matlab longest living guy, longest living. Amar, Amar. Tortoise. Okay, good. Something else. Something else. Blue whale, largest and protozoan is the oldest. No, no, no. Bacteria was found on a moss in South Africa. Okay, okay, okay. Something more. Okay. So when we talk about reproduction, we talk about something called a life span. What is lifespan? Birth से लेकर natural death. We don't count murders, thefts, and all those obnoxious stuff here. What is lifespan? Birth से लेकर death. Different organisms live for different times. Parrot lives for 150 years. Sequoia trees 3000 to 4000 years. Now do you still want to count turtle and protist and tortoise and all? Sequoia trees 3000 to 4000 years. Then you have Lomancia Tasmanica, beautiful plant. Lomancia Tasmanica. Now technically these guys live for 300 to 400 years, technically speaking. But if this is a guy and it produces a clone by asexual reproduction, these are same individuals essentially, right? These are same individuals essentially. So this Lomancia tasmanica is the longest living species for over 43,000 years ago. 43,000 years. Now do you have anything to say? Right? 43,000 years. Parrot seriously lives. Yeah, beta. That was the whole logic, you know. Your kings and queens, वो तोते क्यों पालते थे? That's the reason. Right? Why did they used to have parrots? Because they used to live quite long. ठीक है? Now,
So once a Lomacia starts growing, it can last about 300 years. But problem क्या है कि इसके जो clones बनेंगे, the oldest clone is 43,600 years known, right? Now the problem is the oldest guy, Lomancia, in front of you, it's dying because of a fungal infection. So you see how humble life is, right? So I saw a movie. I don't know if you people have seen the movie The Last Airbender. किसी ने movie देखी है क्या? The Last Airbender. Anyone who has seen the movie? And some of you might be thinking, sir, आप bio में movie क्यों घुसा रहे हो? So what's the problem with the clones? Do they make the plant immortal? Sort of, yes. Their genes are continuously living, so yeah, they are sort of immortal unless they die, right? So in the last Airbender movie, there were moon and the ocean spirits, very powerful spirits. So, but these powerful spirits took the form of fishes, two fishes who were continuously circling each other, right? So one of the guy asks, why do such powerful spirits take the form of such stupid creatures? And the answer was to teach mankind humility, right? Okay, so such humble plants, right? Such humble plants, 43,000 years, and the way that it's dying is by a fungal infection, right? Immortal jellyfish which keep on growing in a smaller form and then again grow back. Okay, but if we see jellyfish, it's longest. No, beta, it's not, because at some point or other they are going to die. Now this is sequoia, the redwood trees, sequoia. And this is the Sequoia National Park. I think it is in California. यहाँ पे आपको you'll find hundreds of these sequoia trees which can live for 3,000 to 4,000 years. Right? Amazing, right? So coming back to lifespan, lifespan can vary. It is not at all correlated with size. जो सबसे बड़ा है, you can definitely see this छोटा सा नन्हा सा guy, and you can agree and argue that they are definitely not the ones that are going to there's a lot of variety, so there's a lot of variety that exists. Now look at this guy. What do you think this is? This is a fungus, right? क्या है ये? Fungus है. What's the name of this fungus? Honey fungus, common name, or you can call it by a fancy name, Armillario. Okay, so this guy is Armillario. There is a forest in the United States called Malheur National Forest, Oregon. So Armillario covers 2,372 acres. 2,372 acres. And this is the largest organism on planet Earth. Once again, why is this spreading 2,372 acres? Because there is no way to distinguish that this original guy is a reproductive product. So they reproduce asexually and they have spread throughout the whole entire floor में वो spread हो चुके हैं, right? And the age is somewhere between 1900 to 8,650 years, right? So nature is really amazing and wonderful, right? So whenever we talk about lifespan, we talk about four parts. Hi Debanjal. We talk about, hi Neha. Uh, we talk about four parts of your life. सबसे पहले is juvenility. Juvenility मतलब you are just growing up. No reproductive capacity right now. कोई reproductive capacity नहीं है आपके पास juvenility में. So before you are like 7 and 8, you are in juvenile phase. उसके बाद आती है maturity. Maturity मतलब reproductive ability develop करने की कोशिश. That is maturity. Then reproduction, right? Then you have a reproductive phase in which you're reproductively active, right?
सॉरी मेच्योरिटी में रिप्रोडक्शन देंगे, सॉरी माय बैड, मेच्योरिटी में you develop the capability and now you can reproduce. Then you have aging and senescence. What is aging and senescence? Growth rate is less than the death rate. If you are a multicellular organism, अगर आप एक multicellular organism हो, तो जिस rate से आप grow कर रहे हो, that is less than जिस rate से your cells are dying. So progressive deterioration, that is aging and senescence. And finally, param satya, that is death. Everything that was born must die except for amoeba and some other creatures like that who keep on dividing and dividing and dividing, and they never uh, go off, right? So if we see the life around us, we understand that a type of reproduction that is very simple is a key to all of this, and that is asexual reproduction. What are the advantages of asexual reproduction? They're really short. Why? They don't need much time to do. Sexual reproduction में you're producing gametes, you're fusing gametes, you're doing all sorts of dance. Asexual में no, एक छोटा सा spore बनेगा, छोटा सा structure बनेगा, bingo, done. Not much energy consuming. Why? Once again, you don't need to find the mating partner. A one guy is enough. एक आलू लो, आलू को काट के लगा दो, नया आलू is there. No need of much problems. आसान है. It's fast. आलू को डाला, आराम से हो गया. It is not much dependent on environment. Alu does not need a pollinator. Alu doesn't need matrimony.com to find you another mate, right? Alu doesn't need to have beautiful feathers like a peacock to attract the female peahen, right? Alu is simply cut and paste. Kaam ho gaya, right? So how many lectures are there for this chapter? Beta, we are planning at least 4 are already there. हो सकता है 5 हो जाए, ठीक है. Saturday को बेटा there is a possibility your YouTube class might be swapped with a special class. That's the only difference that is going to happen. अगर the YouTube hours, right, there's a hour thing, it's not concerned with you, it's an internal thing for me. So there's a possibility कि Saturday को सेम क्लास जो YouTube पे क्लास होनी है रात वाली या सुबह वाली, हो सकता है वो स्पेशल पे हो जाए. स्पेशल्स आर आल्सो फ्री, सो नो प्रॉब्लम, ठीक है. वी हैव प्लान्ड 4 क्लासेस बट ऑब्वियसली 4 वुड बी लेस, तो इट माइट गो टू 5, ठीक है. विल सी. नाउ but the beauty of asexual reproduction is less variation. The only variation that you are going to get in asexual reproduction is the errors, है ना. जब आप डीएनए को कॉपी कर रहे थे, आपके पास एरर्स हुए, एंड दैट एरर्स इज गोइंग टू गिव यू सम न्यू कॉम्बिनेशन. So do fungi undergo a syncytium and why is a mycelium considered to be a single organism? So अभी जब fungi पढ़ेंगे, कल हमने aseptate और septate fungi पढ़ा था ऋषभ, I think पढ़ा था क्या? तो aseptate fungi में बीच में कोई cell wall नहीं है, there's a continuity. So आप उसको एक syncytium बोल सकते हो because it's a multinucleated condition. जो septate fungi होता है, बीच में उसमें दीवार होती है, right? So you can have septate or aseptate fungi. That is why it's considered a syncytium. अगर aseptate है तो बीच में कोई दीवार ही नहीं है. Problem solved. Right. Now we are going to talk about various kinds of asexual reproduction. So asexual reproduction को हम classify कर देते हैं natural और artificial. The only difference is natural अपने आप होता है, मतलब आप उसे कंट्रोल नहीं कर रहे हो. You are not directing it. It happens in nature by its own. आर्टिफिशियल में क्या होता है, वी आर यूजिंग द नेचुरल प्रोपगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लांट. हम नेचुरल प्रॉपर्टी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा जी, बट वी आर कंट्रोलिंग इट, वी आर इंड्यूसिंग इट, हम करवा रहे हैं, बट हो वैसे ही रहा है. ऐसा नहीं है कि हमने कोई तिलिस्मी जादू कर दिया. नो, वी डिड नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट. इट वॉज an inherent property that occurred in nature. We are just exploiting it. आलू को आप ना भी डालो ना, तो आलू इज एबल टू प्रोड्यूस अ न्यू आलू का प्लांट, राइट. आलू डिड नॉट कॉल यू, ओ इंसान आवी जा प्लांट मी इन द सॉइल. नो, इट विल डू इट दैट ऑन इट्स ओन. बट इफ you are using an aloo to grow a new aloo,
That is artificial propagation. That's the only difference. ठीक है, and it gets complicated in forms of tissue culture, which we'll talk about, don't worry. Now we'll talk about several natural ways of asexual reproduction in unicellular and multicellular organisms. We'll talk about fission, budding, spore formation, regeneration, fragmentation, conjugation, budding, gamma formation, gemmule formation, blah blah blah. So we'll keep on doing all of that. ठीक है? Okay. Fission. Fission का simple मतलब होता है टूटना, to break. Let me just get a sip of my tea. Okay, I should keep this नीचे. Okay, so fission का मतलब होता है टूटना, to break. Binary fission मतलब something is splitting into two. It can spread up. It can have. This is an amoeba. इसको ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बेचारा amoeba, भोला भाला. It can occur along any plane. So tea or coffee? Better it's tea. अदरक वाली चाय सुबह सुबह. Okay. It can occur along fixed planes. Fixed plane का क्या मतलब है? किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल लीशमानिया सबसे पहले ऊपर का फ्लैजेलम डिवाइड करता है. दिस कैन यू सी, ऊपर का फ्लैजेला डिवाइड करके दो बनाएगा और फिर नीचे की बाकी बॉडी डिवाइड करेगी. क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनली हो रहा है तो इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिशन. ठीक है. नाउ देन यू हैव ट्रांसवर्स फिशन. सब not good. We are just studying and you're having a tea. Oh, you're studying tucked inside your blanket and I'm sitting on a chair. How does that sound? Who wins the game here? I do, right? Okay, now focus. So, transverse fission मतलब transverse, latitudinally आप काट रहे हो, ठीक है? Now, एक चीज याद रखना बेटा, there's difference between this picture, what you're seeing right now, and there's another picture that I'm going to show you, which is very ugly, and I hate to teach you that, but I'll have to. And this picture, right? This is different than that, and there's a lot of different things that's happening here than that's happening there. So that is asexual reproduction in paramecium itself. ठीक है? आप बीच से काट रहे हो, your DNA, this is the micronucleus, this is the macronucleus, they are both dividing and cytoplasm is splitting. बस कुछ नहीं हो रहा major. Will we get these slides? These slides are already updated in the tracker, but the slides will be updated as we proceed. जैसे कि ये material आपको नहीं मिलेगा. जो अभी reproduction की slide है उसमें ये material नहीं है क्योंकि ये material मैंने आज सुबह डाला है. ठीक है, बट ये आज रात को अपलोड हो जाएगा. फिर कल रात को जो अपलोड होगा वो उसमें थोड़ा शायद एक्स्ट्रा होगा. तो फाइनल वाला डालना आप. सर सीलिया ऑल्सो डुप्लीकेट? हाँ बेटा, सीलिया तो ऑलरेडी है ना मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड. इट्स एवरीवेयर. रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है थोड़ा बहुत, राइट. ट्रांसवर्स इज paramecium, longitudinal is leishmania. Guys, I should have written all of them in italics. सभी को italics में लिखना चाहिए था, but I did not have time to format the PPT through that, इसीलिए वो italics में नहीं है सब जगह. ठीक है. Multiple fissions, plasmodium, right? Plasmodium में you have schizogony, है ना? Even if someone forces a bullet at me, I'll be saying, yeah, so see, my 1 cup of tea and your layers of kammal. So who wins the game? You, right? Okay, so multiple fission is plasmodium, जिसमें एक सेल जो है multiple nuclei में divide करता है, and each nucleus gathers its own cytoplasm and leaves. Some organism like amoeba itself can do both. Multiple fission भी कर सकता है, binary fission भी कर सकता है. ठीक है. You can remember this example as well, Trypanosoma borrelii. ये भी दोनों करने में सक्षम है. Okay. Now multiple fission. इससे थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं. That is why amoeba सबसे पहले क्या करेगा, अपना pseudopodia अंदर चिपकाएगा. अगर आपको नहीं पता pseudopodia क्या है, these are little arms, है ना, ऐसे arms होते हैं इसके.
तो सबसे पहले अपना स्यूडोपोडिया अंदर चिपकाएगा. What it will do next? It will secrete a 3-layered cyst wall. अपने चारों तरफ 3-layered cyst wall secrete करता है, जिसको कहते हैं इंसिस्टेशन, और वेट करता है. फेवरेबल कंडीशन आएगा. जब आ जाता है तो स्यूडोपोडिया स्पोर्स, अजीब सा नाम है, यू कैन फॉरगेट दिस. स्यूडोपोडिया स्पोर्स रिलीज करता है, एंड बिंगो, देयर इट इज, मल्टीपल अमीबा डांसिंग अराउंड. ठीक है. आई एम नॉट टीचिंग यू अभी प्लास्मोडियम का पूरा लाइफ साइकिल, बट विल हैव टू कवर इट समवेयर और द अदर, एक्सोइरेथ्रोसिटिक वगैरह. आई एम नॉट टीचिंग दिस अभी, बट विल कवर इट समवेयर. बडिंग इज वेरी सिंपल. ये अगर एक हाइड्रा है, दिस इज अ हाइड्रा, माय ब्यूटीफुल हाइड्रा. ये पहले एक आउटग्रोथ बनाएगा. आउटग्रोथ इज जस्ट अ ग्रोथ ऑफ द बॉडी इटसेल्फ. माइटोसिस करके न्यूक्लियस डिवाइड करेगा थ्रू माइटोसिस, एंड द न्यूक्लियस विल माइग्रेट टू दिस बड. नाउ इट्स अ full-fledged thing, right? And this bud then keeps on getting bigger and bigger and bigger, and ultimately it might grow apart and form the new organism. बडिंग हाइड्रा में होता है, और बडिंग ईस्ट में भी होता है, सेकेरोमाइसिस ईस्ट में भी होता है. यहां पर देयर इज वन थिंग दैट नीड्स टू बी मेंशन्ड वेरी इंपॉर्टेंटली. अगर मैंने बोला कि हाइड्रा में बडिंग होती है, इसका ये मतलब नहीं है कि हाइड्रा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, राइट? कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें सिर्फ वन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन हो, एसेक्सुअल ही हो, सेक्सुअल ही हो. एवरीवन हैज गॉट मल्टीपल वेज. ठीक है. सुमन सर, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन? कमिंग अप बेटा. फ्रेगमेंटेशन जनरली हैपेंस इन यूनिसेलुलर, रीजनरेशन इन मल्टीसेलुलर. विल टॉक अबाउट दैट, डोंट वरी. नाउ जब बर्ड फॉर्मेशन बॉडी के बाहर हो रहा है, तो आप इसको कहते हो एक्सटर्नल बर्डिंग. यू यूज द नेम एक्सटर्नल बर्डिंग और एक्सोजीनस बर्डिंग. एक्सोजीनस मतलब बॉडी के बाहर हो रहा है. ये बॉडी के अंदर भी हो सकता है, तो आप बोलोगे एंडोजीनस बर्डिंग. व्हाट इज एंडोजीनस बर्डिंग? इसका एक एग्जांपल है जेम्यूल फॉर्मेशन. व्हाट इज जेम्यूल? नाउ कैन यू सी दिस छोटा छोटा मटर का दाना? एवरीवन, कैन यू सी दीज मटर का दानास? आई होप एवरीवन कैन. यस, these छोटा छोटा मटर का दानास, they are called gemmules. They are found in sponges, spongula. स्पॉन्जिला इज अ वेरी बेसिक एनिमल, एकदम बहुत सिंपल एनिमल होता है. इसका पिक्चर हम बाद में देखेंगे. तो उनमें पाया जाता है. ना दीज वाटर स्पॉन्जेस, they have these gemmules, and each gemmule is nothing but a filled structure of the cells called archaeocytes. Each gemmule is filled with archaeocytes, and it is covered with a protective coat. There is छोटा सा होल, यहाँ पे आर्कियोसाइट्स भरे पड़े हैं, ये पूछ लिया जाता है कभी काल. ठीक है, फाउंडेशन लेवल पे. और देयर इज अ छोटा सा होल जिसको आप कहते हो माइक्रोपाइल, और इस होल से ही आपके ये आर्कियोसाइट निकलेंगे. जब फेवरेबल कंडीशन होगा तो दे कम आउट वाया दिस माइक्रोपाइल. Guys, several pictures used in the PPTs are picked from different books and research papers. Each of them have been credited somewhere or the other in the PPT, so that this becomes a fair use for educational purposes only. No infringement is intended. जैसे ये picture was picked from Jakhelkar, Sriraj Ghate and Hemant from their paper in 2014, right? Now, yes, so these are आपका जेम्यूल्स. यही है आपका जेम्यूल. ये इसका सेम है. व्हाट इज अ सेम? कैन एनीवन टेल मी सेम क्या होता है? गाइस, व्हाट्स सेम? व्हाट इज अ सेम? गाइस, व्हाट इज अ सेम? कम ऑन. एंड व्हाई आर ओनली 5 people watching? ऐसा क्या हो गया?
इज देयर सम अदर क्लास गोइंग ऑन? ऐसा तो नहीं है ना यार, कम ऑन, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्लास कब है? 11 बजे। ओके, वेरी गुड। राहुल सर की क्लास 11 बजे है, तो देयर इज नो ओवरलैप हैपनिंग। नॉट नोइंग। Okay, so I will teach you later on about electron microscopes, जो इलेक्ट्रॉन की बीम का इस्तेमाल करते हैं टू फ्रेम इमेजेस। स्कूल की क्लास होती है। ओके ओके ओके, आई अंडरस्टैंड, सॉरी बेटा जी। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स कुड बी ऑफ टू टाइप्स, सेम एंड टेम। अब आप बोलोगे सर इतने अच्छे नाम तो हो नहीं सकते, है ना? अब लेकर आओ कि कुछ कुछ गंदा सा नाम होगा। सो सेम मीन्स स्कैनिंग, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। टेम का मीन्स है ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। गुड मॉर्निंग श्रेया। श्रेया, व्हाई डिड यू मिस द इंट्रोडक्शन? अच्छा सॉरी, यू हैड ट्यूशंस राइट, कोई बात नहीं बेटा। सो सेम एंड टेम में फर्क क्या होता है? देयर इज अ स्कैनिंग एंड देयर इज अ ट्रांसमिशन। तो जब भी हमें किसी भी सेल का, किसी भी चीज का सरफेस फीचर्स को पढ़ना होता है, तो वी यूज अ सेम, राइट? तो दिस इज वन जेम्यूल, ये एक जेम्यूल है जिसका आपने सरफेस फीचर्स पढ़ने के लिए, ये देख रहे हो, इनटू 500। गाइस कैन यू ऑल सी कितना मैग्निफिकेशन है बेटा? इनटू 500, 500 गुना मैग्नीफाई किया। और ये कितना गुना? 1000 गुना मैग्नीफाई किया, राइट? और आपको ये जो होल दिख रहा है, कैन एनीवन सी दिस होल? दिस इज द माइक्रोपाइल आई वाज टॉकिंग अबाउट, राइट? दिस इज द माइक्रोपाइल, राइट? तो यहीं से आपका जो है जेम्यूल्स रिलीज होंगे, और दे आर रिलीज, they will find a suitable substrate and they will keep on growing. Okay, so to see the nucleus we use बेटा न्यूक्लियस वैसे तो आपको दिख जाएगा माइक्रोस कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप से, बट उसके लिए भी अगर आपको डिटेल्ड फीचर चाहिए तो यू विल हैव टू यूज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। ठीक है, वैसे तो दिख जाएगा आपको इसमें, क्योंकि स्टेन होता है ना, दिख जाएगा, बट आपको फिर भी वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना? फ्रेगमेंटेशन क्या है? हाँ, फ्रेगमेंटेशन हैपेंस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसका ऑर्गेनाइजेशन लगभग सिंपल है। सिंपल बोले तो इट इज मेड अप ऑफ सेल्स दैट आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। ठीक है, दे विल ब्रेक टू गिव द न्यू ऑर्गेनिज्म, एज सिंपल एज दैट। एक्सटर्नल इंजुरी के कारण वो टूटेंगे, जब वो टूटेंगे दे विल गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल, बिकॉज ऑल सेल्स आर वर्चुअली सेम। This is a Spirogyra, a multicellular fungi. So should I attend school classes? Beta, you should. You should. देखो, कभी काल some things are not exactly how you would want to, but मतलब don't leave it completely. I mean, there are things that you need out of that experience as well. Schools are a part of your social experience, and those social experiences they shape you, right? So don't isolate yourself socially. Don't do that. It creates personalities that might not be very amicable in the future, right? So whatever it is, participate, right? मतलब obviously don't participate to a level कि बस कुछ उल्टा ही हो रहा है, but yeah, participate, right? ओके, सो स्पाइरोगायरा बीच से टूट जाएगा। क्यों? वाटर करंट आया, वाटर करंट बहुत तेज था, स्पाइरोगायरा को चीरते हुए निकल गया। ओके, अच्छी बात है। नाउ दिस स्पाइरोगायरा वहां से टूटा, दे विल सिंपली गो ऑन क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, दैट्स इट। ओके, फ्रॉम अ लोअर ग्रेड, बेटा देखो, narrowing down, I don't know. They should increase the syllabi to cover, and they should change the mode. They should change the mode. I'll tell you one thing. 10th में हम आपको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बताते भी नहीं, वी डोंट इवन टीच यू दैट, राइट? हम 11th 12th में बताते हैं। वी टीच यू अबाउट एनिलिडा, राइट? यूएस सिस्टम्स में
You take an annelida and you see inside them. You take cells and look it inside the microscope and then you identify the stages, right? तो narrow down करना चाहिए, but 10th level तक narrow down नहीं करना चाहिए बेटा. The reason कि narrow down नहीं करना चाहिए is you need that experience. आपको अभी लगता है कि you don't need that. जब तक मैं 10th में था, I was so ignorant about maths कि मैं क्या कर लूंगा मैथ्स पढ़ के, राइट? 11th 12th में आई यूज टू थिंक कि इतना डेप्थ में फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं. आई वांट टू बिकम अ बायो पर्सन. आई डोंट नीड द फिजिक्स, राइट? 3 years later I fell in love with quantum biology, right? एंड क्वांटम बायोलॉजी तभी समझ में आएगा जब आपको क्वांटम फिजिक्स समझ में आएगा, जो 11th एंड 12th में भी नहीं पढ़ाते, बोल देते हैं आउटसाइड ऑफ द स्कोप ऑफ द एनसीईआरटी, राइट? सो इसीलिए they should teach you all subjects till a certain level, and they should increase the syllabi and make it more practical. I mean, the reason that you don't like history is the way it's taught, pure and simple. The way it's out there, mugging up dates, mugging up who did what. No, why don't you have museum visits? I mean, why don't I mean, that's the way you should be doing history. Why don't you have school trips? I mean, मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए. If they are teaching you about, let's say, Ashoka, go to the place where you find the Ashoka pillar. You would be fascinated कि उस समय they had somehow the technical knowledge to create a pillar that isn't rusting even till now. I mean, whoa, right? So थोड़ा सा उसमें बदलाव का जरूरत है, and I guess that's happening, but समय लगेगा. But until that, take as much virtual experience as you can. ठीक है? Coming back to the topic. Hi, beta. I'm good. Thank you so much for asking. I hope you're good too. Now, so fragmentation, it will break the organism to give something new. Okay. Oh, yeah. To an extent, Rishabh, I fell in love with biology partly because my teacher made it that amazing, right? I like chemistry for the same reason. I'm not saying my physics teacher was not a good teacher, he was a brilliant teacher. But I just couldn't find my attachment to physics until I came across the lectures of Professor Ramurthy Shankar, who is from Yale, right? So many a times that effect affects, right? All teachers are good teachers, but somehow some people just make it someday, right? So have you graduated from which college? Amity beta Suman. Amity University, Noida. ठीक है? Okay, चलो regeneration. Now, who can identify this? पहचानो कौन? कौन है ये? What's this guy? 2 years. What's this guy? Come on. Someone recognize this from your textbooks or something. Come on. Someone. I need someone to recognize this. Yes. किसी ने NCERT खोली होगी बहुत पहले तो दिखा होगा. Okay. So this guy is Planaria. So regeneration happens. Wow, very good critic. So differentiated organisms who have some level of specialization, they have cells within them that retain the capacity to give the whole organism. So if you just think about cutting the planaria in two, they will regenerate, and they will regenerate to give you the two complete organisms, not just parts. So if I decide to cut my finger, it is not going to come back. I will never decide to do that. But if I decide to scratch my skin would regenerate. It would repair itself. But इस समय regeneration is at best a repair process. It's not a reproductive process. इसीलिए हम कहते हैं बेटा जी कि regeneration is not always reproduction, because it need not give you the whole organism. But some organisms have a great level of regeneration. Planaria, Hydra, sponges, starfishes. You cut them out and they'll give you the entire organism.
Now can anyone recognize what is this? एक खतरा खून and नया सोना सिंह, yeah, right? So that would be amazing, right? कि I just drop of blood and नया सोना सिंह खड़ा हो गया, right? चलो, so this is C anemone. ये आपका C anemone है. I'll teach you about them. Don't worry. So ये C anemone को यहाँ पे किसी ने इंजर कर दिया और यहाँ पे एक नया C anemone खड़ा हो रहा है, right? So in many early organisms, coelenterate, sorry, poriferans, we have a lot of these guys. ठीक है. Now planarians, but remember once again to the fact कि जरूरी नहीं है कि if they do a particular mode of reproduction they don't have another. So planarians are actually hermaphrodites. Hermaphrodite मतलब Hermes and Aphrodite. That means there's a female part and there's a male part, and that means they can carry out sexual reproduction as well, right? Okay, so like sponges they can cross fertilize between two individuals. आराम से ये हो सकता है. So this happens accidentally, yes, जब भी आपने कभी इंजरी हो गया तो. बेटा मैं इग्नोर कर रहा हूं, इसका कोई रीजन तो जरूर होगा ना, है ना? ओपी गेमर्स, राइट? सोचो कोई आपको क्यों इग्नोर कर रहा है. So my father had an ambition to keep a marine aquarium and we had brought two sea anemones, but due to wrong levels of sanity they oh my god, कोई बात नहीं. But you know, keep them. मतलब it's good to be exploring life like that, and that's really good of your father. Wow. मतलब I always want to have a dog, but I'm just afraid that I might not be a good match for the dog. Okay, so gamma. What's the next reproductive feature we are going to talk about? We are going to talk about gamma. What are gamma? Gamma are, they could be unicellular or multicellular group of cells. हो सकता है unicellular हो. They are propagules. मतलब the plants or organisms who have that, they can propagate just by using that. Propagules आपको बहुत commonly मिलते हैं bryophytes में. Markensia is an example of a bryophyte, and if you don't know what is a bryophyte, don't worry, plants में पढ़ेंगे. It's a type of a plant. ठीक है? Okay, I had a parrot 2 years ago. He died. Sorry, beta. So to know that. Okay, now detached from the parent. So these gemmules, they are born in gamma cups. ये जो cup like structure आपको दिख रहा है ना, इसको कहते हैं gamma cup. तो इन gamma cup के अंदर gemmules हैं. Sorry, इन gamma cups के अंदर gamma है. And when they get detached by simply, you know, some injury or something, they can give rise to the new body. Beta propagules, a group of cells that can bring together the whole organism. Simple. Nothing मतलब too fascinating, not too tacky about it. मतलब cells हैं जो पूरा organism बना सकते हैं. That is it. Okay. Sir, I had a cat और वो भाग गई. Sorry to hear that. Sorry to hear that. Okay. Next, but not the least, is a spore formation. What is a spore? कल हमने बैक्टीरिया पढ़ते समय स्पोर देखा था, राइट? सो हाउ डू दे फॉल ड्यू टू एक्स्ट्रा? बेटा इट कुड बी अ पेट, इट कुड बी एनी, बगल से शेर जा रहा था, शेर का पंजा लग गया, गिर गया गेमा, है ना? क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिज्म ज्यादातर जंगल में पाए जाएंगे, नदी के किनारे और यू नो रेन फॉरेस्ट. तो बगल से बंदर जा रहा था, बंदर की पूंछ लग गई, गिर गया, है ना? दैट्स इट, सिंपल, राइट? बहुत तेज की आंधी आई, गिर गया. ओके, सो it's very easy. It's very easy, and that's how they are placed. They want to fall so that they can produce a new offspring. ठीक है? Now spore formation. So what is tissue culture? अभी आएगा बेटा आदित्य, अभी आएगा, एक एक करके आ रहा है. Don't worry, एक एक करके आ रहा है. अभी class is going to go for another hour or so. Don't worry, अभी सुबह हुई है, वो भी आएगा. Now several prokaryotes and fungi, they have resistant cells that we call spores. Now spores are resistant in the way मतलब they can survive desiccation. Desiccation का क्या मतलब होता है? Extreme dryness, loss of water. They can survive food shortage, right? They can survive food shortage, right? So heat, desiccation, chemical attack, वो सब कुछ को survive कर लेते हैं. And when these spores land on something nurturing, something nurturing का मतलब जिसके पास न्यूट्रिशन है. फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रेड खराब क्यों होता है? क्योंकि हवा में आपका राइजोपस के स्पोर्स आराम से घूम रहे होते हैं, वो गिर जाते हैं.
जब वो ब्रेड के नीचे गिरे, ब्रेड के ऊपर गिरेंगे, तो वो धीरे 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 आपका स्पोर जर्मिनेट करेगा. इट विल फॉर्म द न्यू फंगा, न्यू फंजाई आपका बना लेगा. एंड दिस न्यू फंजाई वुड कैरी ऑन टू द लाइफ साइकिल ऑफ द फंजाई. ठीक है. So this is spore formation. स्कूल की क्लास है 9 10, डोंट वरी, मैंने मजाक किया था. 9 10 है ना. Okay, I'll try to wrap up by 9:15 or 30. ठीक है. So they can germinate to give rise to the new organism. वो germinate करके नया organism बना सकते हैं. Now, over the course of diversity, especially in fungi, you will try to study different types of spores. So they need moist and humid places to germinate, not to survive. Because they can survive anywhere, Rishabh. They need moist and humid places to germinate, to give back. है ना? Now they are zoospores. Zoospores. They are conidiospores. They are sporangiospores. Different organism can give rise to different types of spores, right? Now, जब भी हम spore की बात करेंगे, they will be produced from a body. That would be a sporangium, right? Zoosporangium. These bodies can be there on a stalk, है ना? Especially fungi में ये होता है, right? तो fungi में these, sir, do the spores also have no, that would be the pollen. That would be pollen, but they have multiple layers. Kritikan, कल हमने देखा ना बैक्टीरिया में there was cortex, there was cell wall, there was another layers, right? Now, generally in fungi, they are born on a specialized hyphae. What is hyphae? कल हमने पढ़ लिया था रात को. Thread-like structures of a fungi is a hyphae. Specialized hyphae. Conidiophore will bear conidia. Sporangiophore will produce sporangiospores, right? So different kinds of spores are born on different kinds of specialized hyphae. ठीक है. अब एक पंगा क्या होता है, आपको नाम पूछ लिया जाता है, और दूसरा पंगा क्या होता है, आपको आइडेंटिफिकेशन पूछ लिया जाता है. तो जब भी ऐसा कुछ दिखे, इट्स अ स्पोरेंजियोस्पोर. जब भी यू कैन सी मल्टीपल ऐसा, राइट, जब भी आपको मल्टीपल ऐसा दिखे, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट कोनिडियोस्पोर्स. ऑलवेज रिमेंबर दिस. ये आइडेंटिफिकेशन कभी आएगा तो आपको वैसे आइडेंटिफाई करना है. व्हेनेवर इट्स सराउंडेड लाइक दैट, इट्स अ स्पोरेंजियोस्पोर. जब भी वो ऐसे गोला गोला सा बना होगा, यहाँ पे देखो गोला गोला बना हुआ है, राइट, तो ये आपका कोनिडियोस्पोर हो जाएगा. You can remember a few names: Aspergillus, Penicillium. These are the guys that produce spores in fungi. Bacteria में you talk about endospores, and endospores are found in Bacillus and Clostridium. There's two guys that you need to know about: Bacillus anthracis. Bacillus anthracis एंथ्रैक्स कॉज करता है, और इसके स्पोर्स शीप वुल में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, राइट? दे वॉन्डर अराउंड हियर एंड देयर, तो उनके वुल में बहुत ज्यादा पाया जाता है. सो दैट इज व्हाई पीपल हु आर इन द वूल इंडस्ट्री, दे ऑफ्टन कॉन्ट्रैक्ट एंथ्रैक्स और यूज्ड टू कॉन्ट्रैक्ट एंथ्रैक्स. हालांकि आजकल वी हैव इलेक्ट्रिक शेवर्स एंड दे कवर मास्क्स, और वी हैव डिफरेंट वेज टू डू दैट. तो इसीलिए आजकल थोड़ा ये रिड्यूस हुआ है. बट स्टिल एंथ्रैक्स कंटिन्यूज टू बी एन ऑक्यूपेशनल हजार्ड. ऑक्यूपेशनल हजार्ड मतलब आपकी काम के साथ कोई हजार्ड आता हो. जैसे द पीपल हु वर्क इन रेडियो एक्टिव laboratories that deal with radioactive substances, they have the occupational hazard of having cancers, right? तो उसी तरह ये एक occupational hazard है. क्लॉस्ट्रिडियम का स्पोर्स, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, आपका खाना स्पॉइल कर देता है. क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी टिटनस कॉज कर सकता है. एंड ये ज्यादातर केसेस में आपके जंग लगे हुए लोहे या सॉइल में पाया जाता है. बट वाई यू हैव ऑलवेज बीन कॉशन अगेंस्ट जंग लगा हुआ लोहा? क्योंकि वहां पे देयर इज नथिंग, नो न्यूट्रिशन, तो वहां पे ये स्पोर्स के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कंपेयर टू सॉइल. क्योंकि सॉइल में एटलीस्ट देयर आर न्यूट्रिशन, सो देयर वुड बी कंपटीशन. बट जंग लगा हुआ लोहा में देयर इज नो कंपटीशन, राइट? Unfortunately, some of these spores have been used as a bio weapon, bioterrorism के लिए.
ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स में एक बार हुआ था कि एक एनवलप भेजा गया था जिसमें बैसिलस एंथ्रासिस के स्पोर्स डाल के भेजे गए थे to the house of a senator or someone, and luckily it was discovered, and then there was a whole inquiry which went to it, and people tried to find out. So use of spores for wrong purposes is always there. Plants also produce spores. Sometimes they hang outside the plant body. So this is a fern. Fern is a type of plant, और उसके lower ends of leaf में what you can see, these dotted lines, these are spore bearing bodies. Yes, tetanus and endospores you taught yesterday. Yes बेटा, ठीक है. चलो, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. अब हम आ रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे. वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब है यू आर यूजिंग अ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट. वेजिटेटिव का मतलब सर इवनिंग यू विल डू रिप्रोडक्शन? नहीं बेटा, इवनिंग में आई विल डू फंजाई. फंजाई बहुत पीछे रह गया है ना, तो आज कोशिश करेंगे फंजाई खत्म करने का ताकि प्लांटी कल स्टार्ट हो सके एटलीस्ट, है ना. तो आज कोशिश करेंगे फंजाई कंप्लीट करने का. रात में दोपहर को कोई एनटीएससी का पीवाईक्यू है, आई डोंट रिमेम्बर कौन सा है. हरियाणा, आज एनटीएससी पीवाईक्यू हरियाणा का है, ठीक है. सॉरी गाइस, ओह माय बैक. ओके, आई शुडंट हैव डन दैट. Where was I? Yeah, vegetative parts of the plant. That means that is not supposed to do flowering. So root, stem, leaves, different parts of the plant can be used for natural vegetative propagation. Now isme unfortunately you got to remember a lot of examples. Not lot, at least the ones that you can try to remember. Now natural vegetative propagation का फायदा क्या होता है? They are genetically similar. Genetically similar होने का मतलब है same genes, same phenotype होगा. That means if there is a particular characteristic जो आपको preserve करना हो तो you can easily do that. So for example you have a rose. Rose has bright red colors and big flowers. You don't want कि meiosis में करवाने से उसका कुछ गड़बड़ हो जाए, तो उसको आप ब्रीड जब भी करोगे you will want to use a vegetative part. You would want to avoid meiosis, ठीक है. Sir, yawning contagious क्यों है? Good question. Maybe because it makes other people feel that they are even also free to relax a little bit or something. एनटीएससी का एग्जाम कब होगा बेटा? अगर उसका आंसर मुझे पता होता तो पता है मैं कौन होता? इफ आई हैड नोन द आंसर टू दैट क्वेश्चन, स्टडी इंडिया, पता है मैं कौन होता? मैं एनसीईआरटी का चीफ होता और रिस्पेक्टिव स्टेट का एनसीईआरटी का हेड होता, जो कि मैं नहीं हूं. राइट बेटा, डोंट फ्रेट ओवर दीज थिंग्स. आप टेंशन क्यों लेते हो? सोचो, जब भी होगा दिन में एक बार खोलो एनसीईआरटी की वेबसाइट चेक कर लो, हो गया, बस प्रॉब्लम खत्म. राइट. कृतिकन, पेरेंटल कैरेक्टर्स आर प्रिजर्व्ड. सर आपका बर्थडे कब है? आई डोंट थिंक आई एम सपोज्ड टू टॉक अबाउट दैट. आई एम नॉट श्योर. इट्स इन अगस्त, बट पॉलिसीज बेटा. द नेक्स्ट अंबानी टू राइज. ओके, सो banana, orange, rose, some of the plants they have lost their capacity to produce seeds. हम उनको भी natural vegetative propagation से breed करते हैं. Now let us look at few examples. Roots, dalbergia and sweet potato, they are famous plants that are propagated via roots. Sweet potato is शायद शकरकंद शायद. Money plants, stem. Sugar cane, stem. So money plants and sugar cane, they are propagated via stem, right? सुषमा बेटा फोकस है ना. ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम is propagated via leaves, ठीक है. Okay, now this is, we'll talk about this. So how orange it has seeds and can, wait, यहाँ orange लिखा हुआ था, sorry, some oranges, some orange, usually banana and rose, my bad. Okay, some particular variety. Now certain times आप specialize, अच्छा ये दिखेगा नहीं है ना, एक सेकेंड, give me a moment. I know. Actually, I use this for plus class, and because this is the same PPT, वो उधर का इधर आ गया.
ठीक है अब okay, sorry guys, just give me one moment and this will be sorted. Okay, done. Now, so specialized sim, sir, the part should contain a bud. Yes. What are the examples of root vegetative propagation? Dalbargia and sweet potato, shakarkand. So, how do people grow seedless varieties of grapes? I think layering शायद होता है grapes में शायद layering करते हैं हम. I don't remember quite well. So, I think that I'm not sure Rishabh, but I think. ठीक है. Now rhizomes. Now you will hear a lot of terms in the next 10 minutes. Rhizomes, stolons, runners, offsets, tubers, uh, bulbs, right? Okay. Please try to remember the examples. Foundation के लिए they will ask you NEET के लिए they will ask you examples. Foundation में शायद ही आपको पूछा जाए, और अगर पूछा जाएगा तो मोस्ट फेमस वाले पूछे जाएंगे. मतलब nobody is going to ask you about stolon or a runner. They will ask you about tuber, आलू. ठीक है. So that is what we'll try to do. So rhizome क्या है? Horizontal stem है, right? ज्यादातर केस में क्या करता है, ये फूड स्टोरेज करता है, बट इट कैन ऑल्सो गिव यू अ न्यू प्लांट. वाई? बिकॉज इसके हॉरिजॉन्टल स्टेम से निकल रहे होते हैं रूट्स, और ये रूट जो है धीरे धीरे न्यूट्रिशन का सोर्स बन जाता है, राइट? बनाना एंड जिंजर आर डन वाया राइजोम्स. ट्यूबर्स. ट्यूबर्स एक हॉरिजॉन्टल स्टेम जिसको आप स्टोलॉन कहते हो, उसका एक्सपैंडेड हिस्सा है. Now tubers have eyes, जैसे पोटैटो में होता है एक eye. What is an eye? It's nothing but a node where you have a bud, right? And this bud has cells that are meristematic, and you get the whole plant, right? Which book do you use as a source while teaching us? Beta, I wish there was one book. So I most of the times use multiple books. Uh, so obviously I use Campbell. There is Hefnagels, there is Mather, there is Morris. Anatomy के लिए I use what is this guy name? Mari Ben Hone. Plant के लिए I use Mozet. There's multiple books, beta. Don't worry, you need not buy those books. I mean, they are not needed आपके लिए. Those are generally used for higher studies, or they're really costly. Okay, don't worry, you'll get these PPTs. आपको उसका टेंशन नहीं लेना है. You'll get these PPTs. इसका एक वर्जन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये भी अपलोड हो जाएगा आज. ठीक है. Now runners and stolons. What's a runner? Once again horizontal stem, but it will be growing above the ground, right? What are stolons? They are similar to runners, but they grow beneath and not ज़्यादातर horizontally. अच्छा, मैंने यहाँ पे horizontal बोल दिया था. So you can see not horizontally, they grow somewhat vertically. ठीक है. So runners and stolons, both of them can easily multiply. अब the another famous example that you need to remember is bulbs. Bulb का example है प्याज. Now what's a प्याज? प्याज is a छोटा सा stem and it is surrounded by multiple fleshy leaves, right? Fleshy leaves is the अंदर वाला प्याज के पत्ते, और प्याज का जो बाहर सा पत्ता होता है, those are scaly leaves. Scaly leaves are dry, papery. ठीक है. So onion can also be used. आप actually onion वाले piece को जाके plant कर सकते हो and you will get the new plant, right? What is corm? Corm is a bigger stem than a bulb and it is largely consisting of scale leaves. अगर होगा भी तो पूरा का पूरा scale leaves ही होगा. You need to remember the example gladiolus in this case. बेटा unfortunately इसमें example याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब पूछा वही जाता है. Suckers. Once again underground branch होगा suckers, but they are originating from the top base of an aerial shoot.
यानी इधर से निकल रहा है, अंदर से नहीं निकल रहा, बेस ऑफ एन एरियल शूट, दैट्स अ सक्कर। ठीक है, ऑफसेट्स आर रनर्स, रनर्स क्या थे, रनर्स क्या थे, ये वाला रनर्स थे, राइट। बट एक रनर में मल्टीपल इंटरनोड्स हो सकते हैं, इंटरनोड मतलब दो नोड के बीच की जगह, ऑफसेट में ज्यादातर एक ही इंटरनोड होगा। Why are potato and ginger stem? If they are called stem, how do you define stem? And why wouldn't sweet potato fit in that description? Okay, what is a stem? Something that came out of plumule or its derivation is a stem. Something that comes out a radical or its derivation is a root, right? So potato and ginger, they are all coming out stems because they have you'll learn later of there is root primordia and this shoot primordia. मेरिस्टेम्स हम जब पढ़ते हैं ना तो हम बताते हैं रूट और शूट प्राइमोर्डिया। अजीत आपका क्वेश्चन नहीं आया सर, द पार्ट शुड कंटेन अ बर्ड, यस। तो अगर रूट प्राइमोर्डिया से कुछ भी डेवलप हो रहा है इट विल बी अ रूट, अगर शूट प्राइमोर्डिया और इट्स डेरिवेशन से कुछ हो रहा है तो इट हैज टू बी अ शूट, राइट। सो दैट इज व्हाई दीज सक्कर्स दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम द शूट और इट्स डेरिवेशन, दैट्स व्हाई। ठीक है, आपका पोटैटो, आपका जिंजर, ये सब कहां से निकला, आपका जो स्टेम था जो शूट प्राइमोर्डिया से बन के आया उसी का एंड पार्ट मॉडिफाई हो गया, राइट। सो दैट इज व्हाई। ओके सर, माय क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन, बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन तो फिजिक्स में होता है ना शायद। अच्छा अजीत, यू आर लॉग्ड इन फ्रॉम टू आईडीज एंड दैट्स व्हाई इट्स गेटिंग मिक्स्ड इन माय विलेजेस आफ्टर कटिंग द रूट, in villages after cutting root for showing they dip these pieces in a green chemical, why? I am not sure about that Ajit. Green chemical cutting the root for showing, कहाँ पे रूट को काटते क्यों दिखाने के लिए, मतलब मैं समझा नहीं, किसको काटेंगे, क्यों काटेंगे? ओके, थोड़ा सा elaborate on your question. Now offsets are just one internode long runners, and offsets become a problem. uh, they're not always a problem, but offsets are usually there in aquatic plants. They have become a problem because of this specific plant, terror of Bengal or water hyacinth. शायद ये इटली या कहीं से लाया गया था, ब्रिटिशर्स ब्रॉट इट बिकॉज दे हैव वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, बट द प्रॉब्लम इज दे स्प्रेड वाइल्डली एंड इसके वजह से दे कवर द इंटायर सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी, पूरा सरफेस ऑफ वाटर बॉडी को कवर कर लेते हैं, नीचे सनलाइट नहीं जा रही, तो नीचे जो फोटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, they are not able to work because of these water hyacinth and hence they are not producing oxygen. Hence, no oxygen, the aquatic species are going to die and eutrophication begins. एक बार organisms are going to die, उनके डिग्रेडेशन में, उनके डिकम्पोजिशन में और से और कंज्यूम होगा, और जितना ज्यादा कंज्यूम होगा ऑक्सीजन उतना ज्यादा the process will keep on accelerating. Okay, so does potato not have any roots? Then does the stem? No, 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 no. Potato does have roots. They do have roots, but they do have stolons as well. Okay, vegetative propagation of potato, ओ में रूट्स को ग्रीन केमिकल में डुबा देते हैं, अच्छा ऐसा करते हैं। ओके, नेवर सीन वन, नेवर सीन वन। ओके, आई हैव टू लुक बेटा, मतलब ऐसा क्यों करते हैं, कौन सा ये ग्रीन केमिकल है, आई रियली कांट मेक सेंस ऑफ इट राइट नाउ, हो सकता है बाद में कुछ हो। नाउ artificial vegetative propagation, artificial vegetative propagation में what you do is you exploit the already inherent reproductive capacity of the plant, whatever that may be. That is the only difference between artificial and natural vegetative propagation. आप कुछ नया नहीं कर रहे हो, आप already existing properties का इस्तेमाल कर रहे हो. Cutting, आपने आलू लिया, आलू को काटा और उसको रोप दिया, this is cutting, right? आप ऐसा sugar canes के साथ भी करते हो, you cut the portions of sugar canes and you plant it. Now this is jojoba. If you use oil तो उसमें देखना jojoba oils, they are very famous, right? So this is cutting and planting of jojoba oils inside a greenhouse, क्योंकि jojoba का plant is very commercially available, ठीक है? In next we have ग्राफ्टिंग. व्हाट्स अ ग्राफ्टिंग? ग्राफ्टिंग में आप एक शूट सिस्टम लेते हो
और एक रूट सिस्टम लेते हो। रूट को आप कहते हो स्टॉक, शूट को आप लेते हो सायन। यू प्लेस इट सो दैट जो वैस्कुलर टिश्यूज हैं वो एक दूसरे से अलाइन हो जाएं। Sir, I've seen a potato plant and it has stem of the ground. So does it have both underground and the obviously it will have both. Right? That cutting of potato in the slide, they dip it, अच्छा वहां पे they dip it in green. Why would they do that? But that would be simply green chemical. अच्छा. Oh, okay. That green chemical would be a plant hormone. It could be cytokinin or auxin का एक mixture. Most probably higher concentration of auxin. Okay. Got it. Thank you so much. अजीत, जब भी हम कटिंग वगैरह कर रहे होते हैं वी ऑलवेज यूज हॉर्मोन्स टू स्टिमुलेट द रूट फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो ग्रीन आपका आपने वो कहा, इट मस्ट बी अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। वो हार्मोनल डिप डालने के बाद उसको प्लांट करते हैं सो दैट इट ग्रोज, ठीक है। नाउ ग्राफ्टिंग में वी यूज टू डिफरेंट प्लांट्स। तो जिसका रूट यूज कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं स्टॉक, जिसका स्टेम यूज करते हैं उसको बोलते हैं साइम, एंड वी पेस्ट देम टुगेदर, right? And then you depend on the xylem and phloem to, they will just simply heal themselves and the vascular continuity maintain हो जाएगी। now इससे मिला के हमने कई सारे अमेजिंग चीजें बनाई हैं। दिस इज पोमैटो, नीचे आलू ऊपर टमाटर, राइट ये ग्राफ्टिंग से बन जाता है बहुत आसानी से। you also do this for cabbage and radish, right? ऊपर cabbage, नीचे radish, right? So this is Chinese cabbage and radish. आप इनके साथ भी grafting करते हो, not supposed to be here. Anyways, ठीक है। So cabbage and radish इसके साथ भी आप ये काम करते हो। Last but not the least is layering. Layering is done in different ways. For example, आपने stem काट दिया, इसके roots हैं, you cut the stem and then you cover all of this in soil. आपने इसको पूरे को soil में cover कर दिया, right? You are doing mound layering. इसी को कहते हैं mound layering. आपने उसको एक mound of soil से cover कर दिया। अलग अलग तरह के layerings होते हैं। एयर लेयरिंग भी होता है, जब यू डू कैरी आउट द सेम थिंग इन एन एरियल स्टेम में आप कवर करते हो तो उसको कहते हो एयर लेयरिंग। अलग अलग तरह के लेयरिंग्स होते हैं, टाइप्स अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेयरिंग आप ब्लैकबेरीज के साथ करते हो वेरी इसेंशियली। ओके, ये भी एक देखो, इन्होंने एक एरियल स्टेम को लिया और इसको कवर कर दिया in a mound of soil. So once again that is mound layering. Now we come to the second last method of vegetative propagation, that is called tissue culture turned micropropagation. Now ये एक propagation, we cannot graft monocots, right? Yes, क्योंकि वहां पे secondary growth नहीं हो रहा, there is no secondary growth happening. Secondary growth का मतलब है सेकेंडरी मेरिस्टेम्स नहीं है, मेरिस्टेम्स जो बाद में बनते हैं प्लांट के पास। सो अनलेस यू हैव सेकेंडरी मेरिस्टेम्स आप उनका ग्राफ्टिंग नहीं करवा सकते, ठीक है। नाउ व्हाट इज टिश्यू कल्चर, व्हाट इज माइक्रो प्रोपगेशन? कल्चर का मतलब होता है टू ग्रो समथिंग, व्हाट यू आर ग्रोइंग टिश्यूज। सो यू आइसोलेट सेल्स। सर टुडे ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? हाँ बेटा, अभी सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा, आई थिंक उतना समय है नहीं हमारे पास, तो आज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कल शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कल खत्म करने का, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस परसों शुरू करेंगे। परसों नहीं, परसों शायद वो स्लॉट किसी और क्लास का यूज हो रहा है, तो सैटरडे को शायद है, राइट? डोंट वरी, आई विल ट्राई कि मैं सर व्हेन इज छुट्टी? Saturday is the last class that you'll have, beta. Saturday, 15th of January is the last class, ठीक है, of this before the छुट्टी, right? So 15th is the last class that we'll have before the छुट्टी। तब तक I will try to finish reproduction and planty and genetics, जितना हो सका we'll try, ठीक है। Okay, cool.
चलो When is today छुट्टी? आज की छुट्टी कब है? 10 to 15 minutes. This is the last topic. ये last है टिश्यू कल्चर एंड माइक्रो प्रोपगेशन. Then you are about free to leave. ठीक है? Give me 10 more minutes. एक सेकेंड यार. ठीक है. 10 more minutes. I'm done. Now you're growing tissues, so you isolate cells and then you first sterilize these cells. Sterilize का मतलब नहीं है कि you kill these cells. You wipe them off in soft detergents. आप soft detergents का use करते हो to wipe these tissues off. The whole reason is कि कोई pathogenic infection ना आ जाए. ठीक है? And then you put them into these plates. फिर आप इसको इन plates में डालते हो. This plate is filled with a media. What is this media? The media is a mixture of obviously water, minerals, and to some extent even hormones. ठीक है? And to just jellify this, jellify का मतलब you convert it or you allow it to become sort of jelly so that the plants can take hold. ठीक है? So it has source of micronutrients, solidifying agents, vitamins and growth regulators that the cell needs. Now ये मीडिया आप कैसे भी नहीं बना. अगार इज अ सब्सटेंस जो हम एल्गी से आइसोलेट करते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कल होगा बेटा, आज तो नहीं हो पाएगा. अभी तो टिश्यू कल्चर चल रहा है ना. सो दिस इज द लास्ट टॉपिक एंड विल फोल्ड दिस क्लास फॉर टुडे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कल सुबह होगा. ठीक है? नाउ द फर्स्ट सच मीडिया वाज मेड बाय मुराशिगे इन स्कूल. ठीक है? इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एमएस मीडिया. इन्होंने पहले हिट एंड ट्रायल करके ये मीडिया बनाया था. ठीक है? Now, so you isolate the cells, you place them, and the first undifferentiated mass जो आपको मिलता है, उसको हमने callus डाल दिया. बेटा अच्छा, you are saying कि don't we have agar here? बेटा solidifying agent ये रहा, right? Solidifying agent we use agar. ठीक है? जो first undifferentiated mass है उसको कहते हैं callus. फिर callus को आप separate करते हो, you plant them. Example, you plant them in different test tubes, and each test tube will again have some sort of different media, some sort of different uh, balance of hormones. When you are using tissue culture to grow new plants, that is micropropagation. Don't confuse the two. Tissue culture का simple मतलब है growing tissues, that's it, बस. You can use tissue culture to do various stuff. For example, you want to study how plant cells behave. You want to observe plant cell division. You want to genetically modify the plants. उस सब के लिए आप टिश्यू कल्चर यूज करोगे. बट जब आप टिश्यू कल्चर से नए प्लांट्स उगा रहे हो तब उसको आप माइक्रो प्रोपगेशन कहते हो. Why do we want to do all of this? Why do we want to do micro propagation? The whole idea is इससे you can have very infection proof cells. आपके पास जो plants होंगे they would be grown in infection proof environment. तो chances of an infection, a plant a pathogen or a disease के आने का बहुत कम है because you do this in closed rooms and then you transmit the plant outwards. हम टिश्यू कल्चर स्ट्रॉबेरीज के साथ करते हैं. माइक्रो प्रोपगेशन स्ट्रॉबेरीज के साथ करते हैं क्योंकि सम प्लांट्स आर मोर प्रोन टू वायरल अटैक्स देन अदर्स. सो आपका जो माइक्रो प्रोपगेशन है, दे आर स्ट्रॉबेरीज है, इट इज प्रोन टू लाइक मोर देन 50 viruses. So we use sometimes this. But the problem with tissue culture and micro propagation is it is महंगा है क्योंकि आप मीडिया लाओगे और आप एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, बिजली का खर्चा आएगा, ऑल ऑफ दैट. ठीक है? Callus, yeah. So more than 60 type of viruses can infect strawberry plants, but you use this to ensure that it works good. ठीक है? Now, tissue culture has also been used to create GMO, genetically modified organisms, right? Uh, why do we want to create genetically modified plants? Because by doing that we can insert a gene that can increase the vitamin content in that,
we can insert the gene that can have pest resistance, यानी कि वो pests को resist करता है. So which hormones are added during micropropagation? बेटा ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन जनरली इन अ बैलेंस्ड रेशियो. जब आपको रूट्स चाहिए होता है तो ऑक्सिन ज्यादा डालते हैं, जब स्टेम ज्यादा चाहिए होता है तो साइटोकाइनिन ज्यादा डालते हैं. ठीक है. ओके. नाउ सर डू दिस शो जेनेटिक वेरिएशन? नहीं बेटा जी, दे डोंट, बिकॉज इट्स एसेक्सुअल मेथड ना. आपने मिक्स नहीं किया, आपने उसके वेजिटेटिव पार्ट से लीफ मेरिस्टेम या स्टेम मेरिस्टेम से उठाया, तो दे डोंट शो एनी जेनेटिक वेरिएशन. बट जब आप जीएमओ प्रोड्यूस करो तब तो अलग बात है, तब तो आप जानबूझ के यू आर इंसर्टिंग अ जीन जिससे आपका फायदा हो सकता है वो विटामिन के लिए हो सकता है वो पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए हो, समटाइम्स इट्स अ रेजिस्टेंट टू वीडीसाइड. इसका एक क्लासिक केस है ग्लाइफोसेट. ग्लाइफोसेट एक वीडीसाइड है, ठीक है. द प्रॉब्लम विथ ग्लाइफोसेट इज ग्लाइफोसेट का ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन दिया तो इवन आपके क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं वो भी डिग्रेड हो सकते हैं. सो अब देखो ये एक प्रॉब्लम है थोड़ा सा यूएस टेक्नोलॉजी का. दे क्रिएट a solution to solve a problem, but they are short sighted sometimes. Now I'm not giving a generic statement, sometimes they are short sighted, and उसकी वजह से क्या होता है, it creates another problem in the future, right? Yes, some of the most brilliant discoveries and inventions have come from the United States. If you people watch the news, कल यूनाइटेड स्टेट्स के किसी हॉस्पिटल में एक पिग का हार्ट एक ह्यूमन के साथ ह्यूमन के अंदर इम्प्लांट किया गया था, ट्रांसप्लांट किया गया था. इट वाज डन फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि एक पिग प्लांट हैज बीन inserted inside a human. Let me know how you feel about that, right? But sometimes their steps can be overreaching. Overreaching is in थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में कॉम्प्लिकेट हो जाता है. इसका क्लासिक एग्जांपल इज डीडीटी. डीडीटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय देम. पूरी दुनिया को डीडीटी एज अ पेस्टिसाइड का आदत पड़ गया. बाद में पता चला कि भाई डीडीटी तो इज एसोसिएटेड विद मेल इनफर्टिलिटी, राइट? इट हैज सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट. तो यूएस ने क्विकली उसको विथड्रॉ कर लिया. उनका थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क स्मार्ट है, स्ट्रांग है, राइट? बट दैट्स नॉट पॉसिबल इन कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि यहाँ पे इतना जल्दी इतना बड़े स्केल पे यूज किए गए प्रोडक्ट को आप विथड्रॉ नहीं कर सकते. सो द पर्सन इज नाउ हाफ पिग. ऋषभ, well, we can't say that. That's not wise to say, and please don't, मतलब it's not good to say that, ठीक है? So no, the person is not pig. The person, what we are is because of here, not what's in our body parts, right? So sometimes, you replace a lost leg by a steel, so we are not man of steel, right? है ना? So yeah, so yeah, the glyphosate is one such thing, right? So what we did, we gave a booster gene. Booster gene का मतलब the plants can now tolerate higher concentration of glyphosate, right? Now because they can tolerate higher concentrations of glyphosate, तो क्या हुआ, अब जो weeds हैं उनको मारना आसान है. You can use higher concentrations of glyphosate now on those plants. ठीक है? We are done for the day. Just a small topic, conjugation. Conjugation is a sort of asexual reproduction in bacteria. Some sexual conjugations भी होता है. We'll talk about that later on in the सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लास, जो कि कल है. कॉन्जुगेशन में ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स. बैक्टीरिया अपने प्लास्मीड को सेक्स पिलाई के थ्रू ट्रांसफर कर सकता है. दिस हैज बीन ऑलरेडी ब्लेम्ड फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड स्टफ्स लाइक दैट. ठीक है? एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क मी, guys, this is the time. Okay, anything that you want to ask, this is the time before I fold the class. Sir, can higher organisms be produced via micropropagation? Not at this moment. And there is a specific ban on doing that. ठीक है? There is a specific ban on doing cloning experiments like that, बेटा. ठीक है? Okay. Horizontal gene transfer का एक example आपका
conjugation है. There are other examples where you are not transferring genes vertically. Vertically मतलब parent to offspring नहीं, between two individuals. So you have conjugation, you have transformation. एक बैक्टीरिया ने अपना जीन सराउंडिंग मीडिया में दिया, दूसरे बैक्टीरिया ने वहां से उठा लिया, राइट? दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन. गाइज प्लीज इंश्योर दैट यू लाइक द सेशन को लाइक जरूर करना एंड स्प्रेड दिस विथ योर फ्रेंड्स एज वेल, so that we can have more and more people coming here. Don't forget to like the session, and I already told you about these amazing batches: premium for class 10 term 2 and golden for class 9 term 2. ठीक है? Let me know if you have any questions, and don't forget to subscribe, click on the bell icon, that makes sure that you have all the notifications. So can you explain transfection? So I heard in nanotech transfection device that has been in Stanford which can make artificial regeneration possible. Okay, there are two different things बेटा. स्टैनफोर्ड की जो डिवाइस की बात करो, आई एम वेरी श्योर दैट इज डिफरेंट, राइट? बट व्हाट अ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे काम करता है? एक बैक्टीरिया ने अगर अपना कोई जीन बाहर छोड़ा हुआ है या बाहर जीन्स हैं, डीएनए है, तो the other bacteria can simply take up the gene via the plasma membrane. Plasma membrane से ही अंदर ले लेगा. And this piece of DNA can get integrated with the chromosomal DNA and be replicated as its very part. This is transformation. इसका classic experiment किया था Frederick Griffith ने, who gave this principle, and then Avery McLeod McCarty sought to prove this, that DNA is the genetic material by doing the transformation experiments, जो हमने एक बार बात भी की थी, if you remember. ठीक है? So conjugation is exactly reproduction ना, there is no new organism formed. That is one of the very strong argument रहेगी, conjugation reproduction नहीं है, क्योंकि आपने बस जीन ट्रांसफर किया, राइट? तो देखो, कुछ ऑथर्स इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल देते हैं, कुछ ऑथर्स इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और कुछ ऑथर्स इसको सेक्सुअल एसेक्सुअल छोड़ो, रिप्रोडक्शन बोलने के लिए भी तैयार नहीं है, बिकॉज दे से इट्स HZT, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, इट्स नॉट रिप्रोडक्शन, राइट? बट आई थिंक कंफर्टेबली हम इसको एसेक्सुअल, मतलब फॉर माय लेक्चर्स आई विल बी क्लासिफाइंग देम एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इट्स समवेयर इन द बिटवीन. ठीक है? Okay, chalo. Guys, this is where we fold the class for today. We'll be back 3:30 NTSE Haryana questions के साथ. ठीक है? Bye bye. Have a good day and take care.